Yes, hello friends. Yes, welcome. Sharmila, sweetie, our new point. This point is very important point. Chemical reactions related with organic halide. First of all, we will see the organic chemical reactions of alkyl halide, and then we'll study about the chemical reaction of aryl halide. Okay. There are main three chemical reactions of alkyl halide. Yes, MEN. First one, reaction with metal. Second one, elimination reaction. And third one, nucleophilic substitution reaction. Okay. तो yes, reaction with metal आज हम ले लेते हैं. There are two types of metal which are used to do the reaction with alkyl halide. First one sodium metal and second one magnesium metal. Both metal always react with alkyl halide in presence of ether medium, mind well. Yes, reaction between alkyl halide and metal always gives the compound in which there will be covalent bond between carbon and metal, and these compounds are known as organometallic compounds. If we carry out the reaction with sodium metal in presence of ether, this is the general formula of alkyl halide, RX. During the reaction, 2 moles of sodium will react in presence of dry ether. What is the chemical reaction? Yes, 2 molecules of sodium, simultaneously 2 molecules of alkyl halide may be required during the reaction. RX, second molecule of RX. Now you see NaX and NaX. During the reaction, twice NaX will be removed as a byproduct and R single bond R. These compounds are known as alkane compounds. For illustration, we can take methyl chloride, chloromethane, ethyl bromide, primary 1 chloropropane, 2 bromopropane. In this compound, the portion remaining yes, except halogen is known as R. This is R, methyl group is R, ethyl group is R. This is primary propyl group is R, secondary propyl group is R. During the reaction, what the general reaction says, R will directly bonded with second R. So CH3 single bond CH3, twice NaX will remove as a byproduct. यहाँ halogen के तौर पे Cl है, that's why twice NaCl will be removed. Yes, यहाँ twice NaBr will be removed. R और R को repeat कर दो CH3CH2, then CH2CH3. यहाँ this is primary propyl group is R, उसके साथ दूसरा primary propyl attach कर दो, तो normal hexane. This is normal butane. This is 2 bromopropane. ये R के साथ R जोड़ दो. 2,3 dimethyl butane. Now you see, in methyl chloride, chloromethane possess only 1 carbon. Product possess 2 carbon. Ethyl bromide having 2 carbon. तो product में 4 carbon. यहाँ 1 chloropropane have 3 carbon. The product possess 6 carbon. ये 3 carbon या 6 carbon. Now कुछ एक conclusion निकलेगा. During the Woods reaction, this reaction is known as a Woods reaction. This is very important. Write a short note on Woods reaction. Which type of compounds give this reaction? Which type of reagents are used during the reaction? Which type of reactants are used? And which is the product? ये सब इट इज आपका लुकआउट है. तो वुड्स रिएक्शन शॉर्ट नोट में लिखो, ऐसा पूछा जाता है. During the Woods reaction, what is the application of Woods reaction? We can convert alkyl halide to alkane compound by using the Woods reaction. Second matter,
During the Wurtz reaction, obtain alkane possess double carbon compared to root alkyl halide compounds. ये उनका ये स्पेसिफिकेशन है. Second reaction is Grignard reagent. Grignard reaction. अच्छा, alkyl halide on reaction with magnesium metal. Yes, this reaction first of all was suggested by the Victor Grignard, is the name of scientist. उसने बनाया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम. तो मैग्नीशियम R और X के बीच एंटर हो गया RMgX. इसको हम अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहा जाता है. In short, these compounds are known as a Grignard reagent, which on hydrolysis by aqueous HX, तो रिएक्शन कैसे होगी? RMgX, HX, this bond will break and this X will directly attach to the magnesium, MgX2 will remove as a byproduct and hydrogen will directly attach with R, the RH. This is also general formula of alkane. Yes, methyl chloride. This is ethyl chloride. This is 1,2-chloropropane. This is phenyl chloride or chlorobenzene. Okay. During the reaction with magnesium in presence of ether medium, R और X के बीच मैग्नीशियम एंटर हो जाएगा. CH3 और Cl के बीच मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज इथाइल मैग्नीशियम. यहाँ Cl2 और Cl के बीच मैग्नीशियम अरेंज हो गया. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. यह CH और Cl के बीच मैग्नीशियम एंटर हो गया तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. ये क्लोरोबेंजीन है, फिनाइल क्लोराइड है, या Cl और बेंजीन के कार्बन के बीच मैग्नीशियम आ गया, ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. Which on hydrolysis by aqueous HX, HX की जगह HCl ले ले तो MgX निकल गया. R will directly attach with hydrogen CH3 और H, तो CH4 मिल गया. During the reaction MgCl2 will remove as a byproduct. Similarly CH3 single bond CH2, यहाँ हाइड्रोजन लगा तो CH2 में हाइड्रोजन is to be merged with CH2, तो CH3 single bond CH3 minus MgCl2 बाई प्रोडक्ट होगी. यहाँ CH3 CH, यहाँ MgCl निकल गया, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस MgCl2. यहाँ MgCl निकल गया, हाइड्रोजन लग गया तो ये बेंजीन मिलेगा माइनस MgCl2. ओके, नाउ यू सी इन मिथाइल क्लोराइड 1 कार्बन, तो यहाँ मिथेन मिलेगा, वो भी 1 कार्बन. Yes, ethyl chloride possess 2 carbon atom, तो प्रोडक्ट इथेन मिलेगी 2 कार्बन. या इसमें 3 अल्किल हैलाइड हैविंग 3 कार्बन, तो यहाँ प्रोडक्ट अल्केन मिले, उसमें भी 3 कार्बन है. इसमें 6 कार्बन, तो प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो हैविंग 6 कार्बन एटम. तो बाय ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऑलवेज completed in 2 steps. During first step, magnesium will enter between alkyl group and halogen, and during second step, hydrolysis will give same, yes, alkane having same number of carbon atom is compared to alkyl halide. alkyl halide में जितने कार्बन होंगे सेम नंबर वाला alkane मिलता है. Yes, in both Wurtz as well as Grignard reaction, दोनों में फाइनल प्रोडक्ट अल्केन है. बट ड्यूरिंग द वुड्स रिएक्शन obtain alkane possess double number of carbon atom compared to alkyl halide, whereas in Grignard reaction
obtain alkane possess same number of carbon atom remain in alkyl halide. Yes, Grignard reaction is also useful to convert alkyl halide to alkene. कभी कन्वर्जन पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन में से बेंजीन कन्वर्ट करो, या मिथाइल क्लोराइड में से मीथेन बनाओ, या इथाइल क्लोराइड में से इथेन कन्वर्ट करो, या तो इथाइल ब्रोमाइड में से ब्यूटेन बनाओ. डबल कार्बन हो तो हमें लेना है वुड्स, और सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन लेना है तो हम ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे. ओके, और ये हम खत्म करते हैं रिश्ते, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.